गुजरात के सूरत में हीरा व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। सूरत के वराछा इलाके में आज उस वक्त तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला जब केपी संघवी डायमंड कंपनी के खिलाफ सैकड़ों हीरा व्यापारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। हीरा व्यापारियों का आरोप है कि उन्होंने कंपनी को सभी बकाया रकम पहले ही चुका दी थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पर दिए गए चेक्स को रिटर्न करवाकर कानूनी केस दर्ज किए हैं। व्यापारी इन केसों को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हीरा व्यापारियों का कहना है कि डायमंड एसोसिएशन और उद्योग जगत के अन्य वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में एक बैठक में भुगतान किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी ने परेशान करने की नियत से कार्यवाही की है। आज અમે ચેક બાઉન્સના કેસ માટે ધરણા ઉપર બેઠેલા છે। 2020 કોરોના કાળમાં અમે ડાયમંડના ધંધામાં નુકસાની જતા નાદારી નોંધાવેલી, જે ડાયમંડ એસોસિએશનની મધ્યસ્થીમાં પંચ દ્વારા બધાને સમજૂતીથી ચૂકવણું કરેલું, તેમાં કેપી સંઘવીના માલિક પણ એગ્રી થયા હતા તે સમયે કે ભાઈ અમને ચૂકવણું મંજૂર છે, તે લઈ ગયા રોકડું, જે અમારી પાસે માલ મિલકત ઝવેરાત જે પણ કાંઈ પણ હોય મિલકત મકાન એ બધું અમે આપી દીધેલું। પછી પાછળથી અમે ચેક જ્યારે એ સમયે ડાયમંડ એસોસિએશને એની પાસેથી માંગ્યા, કેપી સંઘવી પાસે, એમના જે શેઠ છે કીર્તિભાઈ પાસે, તો એમને ત્યારે એ સમયમાં કીધેલું કે ભાઈ ચેક તમે હવે ભૂલી જાઓ, એ તો મેં ફાડી નાખ્યા, હવે આપણે બધો ક્લોઝ અત્યારથી। પછી બધાને 6 મહિના, કોઈને વર્ષ દિવસ, કોઈને 2 વર્ષ પછી પાછા ચેક બાઉન્સ કરાવીને અત્યારે બધાને કોર્ટ મેટરમાં કેસ ચાલુ છે। આમાંથી એક ભાઈ 1 વર્ષ દિવસ જેલમાં જઈ આવ્યા, એક ભાઈ 2 વખત જેલમાં જઈ આવ્યા, અને બધા ધારાસભ્યો, બધા અગ્રણીઓ, ડાયમંડ એસોસિએશન બધાને અમે રજૂઆત કરી છે। ગયા વીકમાં અમે સીએમ સાહેબને મળવા ગયા હતા, એમને બી અમને સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે, પણ અમને આનો કેપી સાહેબ, જે કેપી સંઘવીના માલિક છે કીર્તિભાઈ, એ મીટિંગ કરવા નથી। તો અમે જ્યાં સુધી અમારા કેસનો નિવાડો ન આવે ત્યાં સુધી અમે ધરણા ઉપર બેસેલા છે। ઘણા ટાઈમ પહેલા ત્યાં આ રીતે વાત થઈ ગઈ ડાયમંડ એસોસિએશનમાં। મેટર તો અમારા ખોટી રીતે જે ચેકો રિટર્ન કરાવીને કેસ કરેલા છે ને એની મેટર છે। હવે શેઠનું એવું કહેવાનું છે કે ભાઈ જેની પાસે નથી અને એની જાતું કરવાલ છીએ, પણ એનું કોઈ આગળની કાર્યવાહી નથી થતી। તો અમે કીધું તમે કોઈ પણને લઈને આવીને અમારા ઘરે જોઈ જાઓ, તપાસ કરી જાઓ કે ભાઈ ખરેખર અમે હવે અત્યારે કઈ રીતે પીડામાં જીવી છીએ। તો હવે એ વસ્તુ કોઈ આ શેઠ મોટા છે એટલે ત્યાં સુધી કોઈ મેસેજ પહોંચતો નથી અને એ આગળ વધતું નથી। હવે જો કમિશનર સાહેબને એમ મળી આવ્યા તો એણે ત્યાં જઈને એવું કીધું કે ભાઈ મારે જેની પાસે નથી એનું ખરેખર નથી જોઈતું એમ, પણ એની એક્શન કંઈક લેવાય કે ભાઈ હાલો આજે જ આજે તપાસ કરી લીધી અને કાલે પૂરું, તો અમે કંઈક આમાંથી છૂટા થઈ અને કેસ પાછા ખેંચાય ત્યારે જ અમારું મગજથી એમ લાગે કે હવે આપણે જીવન જીવી નવું। બાકી આના ટેન્શનમાં શું करવું એ खबर नहीं पड़ती, એટલા બધા દુખી છીએ અત્યારે। कांग्रेस का 64वां अधिवेशन आज से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो गया है। ये 8 और 9 अप्रैल 2 दिन तक चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शाम को साबरमती आश्रम जाएंगे। फिलहाल प्रियंका आज अहमदाबाद नहीं पहुंची है। वहीं कल की मीटिंग के लिए आज 2 चार्टेड प्लान में 80 कांग्रेस नेता अहमदाबाद पहुंचेंगे। कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ हुई है। ये बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र स्मारक में आयोजित की गई। इसमें सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। कल 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन होगा, जिसमें देश भर में 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। यहाँ वीवीआईपी डोम बनाया गया है। इस अधिवेशन की थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे सीनियर लीडर मौजूद हैं। पार्टी के मुताबिक ये अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। दोनों ही महान विभूतियां गुजरात में पैदा हुई थीं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी यह अधिवेशन गुजरात में कर रही है। अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे, और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है।
सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में पत्नी को दुपट्टे से फांसी देकर मौत की घाट उतारने वाला पति गिरफ्तार हुआ है। वडोदरा के तांदलजा के एकता नगर में रहने वाली मुस्लिम विवाहित तस्लीमा बानू की 6 अप्रैल को मौत हो गई थी। इस मामले उनके भाई मोहसिन शेख ने गले के हिस्से पर किए गए निशान को देखकर मामले की शिकायत पुलिस थाने में की थी। ससुराल वाले विवाहिता की मौत हार्ट अटैक से हुई होने की बात कर रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम में गले फांसी देकर हत्या किए जाने की हकीकत उजागर हुई है, जिसके बाद जेपी रोड पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर महिला के पति जावेद मंसूरी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। पति से पूछताछ में पति ने दुपट्टे से फांसी देकर पत्नी को मौत के घाट उतारा होने की बात कबूल की है। जे फरियादी छे एमना जणाव्या मुजब के एमना जे दीकरी छे एमનું મૃતદેહ છે જેપી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, તાંદલજા વિસ્તારમાં, એકતા નગરમાં શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો। શરૂઆતમાં જ જે તે દિવસે છે એક્સિડેન્ટલ ડેથ, અનનેચરલ ડેથ દાખલ કરી અને રાત્રે જ પીએમ માટે મૃતદેહને છે પીએમ રૂમમાં મૂકી દેવામાં આવ્યો હતો। શરૂઆતમાં જે સિમ્ટોમ્સ જણાતા હતા કે એને કોઈ પણ જગ્યાએ થ્રોટ છે એ બેસી ગયેલો હોય એવું બહારથી દેખાતું નહોતું અને બીજા કોઈ સિમ્ટોમ્સ એવા લાગતા નહોતા કે એનું કંઈક સ્ટ્રેંગ્યુલેશન થયું હોય। તો પછી પીએમ રિપોર્ટ કરતાં પીએમમાં જાણવા મળેલ કે એનું સ્ટ્રેંગ્યુલેશન જ થયેલું છે અને ગળું ઘોટાવાના કારણે એનું મૃત્યુ થયેલું છે। તો એ પછી એના જે વાલી છે એની ફરિયાદ લઈ અને 103 મુજબની ફરિયાદ લઈને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ હતો। આરોપી છે એના લગ્ન છે આજથી 17 વર્ષ પહેલાં મરણ જનાર સાથે થયેલા હતા અને નવાપુરાના રહેવાસી હતા અને આ જે પતિ છે સતત શંકાશીલ હતો કે ભાઈ આ મારા વાઇફ છે એમનું કોઈ જગ્યાએ કંઈક ચાલી રહ્યું છે એવી શંકાને કારણે કે આડા સંબંધ હોવાની શંકાને એને સતત શંકા રહેતી હતી અને કાલે તે દિવસે પણ એને લઈને એની બોલચાલ થઈ હતી અને આવેશમાં આવી જઈને આણે એનું દુપટ્ટાથી ગળું ઘોટીને મૃત્યુ નિપજાવેલ હતું। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices.
SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. एक तरफ जहां वक्फ विधेयक को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, वहीं वक्फ के समर्थन में इस्कॉन मंदिर में संत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्फ विधेयक 2025 को लेकर देश भर में बहस तेज है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने इस विधेयक को अपना खुला समर्थन दिया है। समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आशा जताई है कि ये विधेयक जल्द ही संसद में पारित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक आवश्यक और पारदर्शी कदम बताया। इसी संदर्भ में आज वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन और अखिल भारतीय संत समिति गुजरात द्वारा एक विशेष संत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था के इस स्थान में अखिल भारतीय संत समिति गुजरात प्रांत के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी प्रांत के पदाधिकारी आज जो यहाँ एक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, उसका उद्देश्य है, एक तो जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो कार्य किया है, एक अद्वितीय, अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यतो ऐसा कार्य वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके उसको कानून स्वरूप देने में जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है, उसके लिए अभिनंदन के लिए ये सभा हुई है। तो सबसे बड़ा नुकसान वक्फ बोर्ड का ये जो बिल में सुधार हुआ और कानून बना, उससे मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वाली पार्टियों को हुआ है। वो महसूस करते हैं कि ये मुस्लिम वोट जो एक जगह एक साथ आते थे, इसकी जगह इस बिल से मुस्लिमों में विभाजन हुआ है। मुस्लिम भी इस बिल का जब स्वागत करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा कि उसके धर्म पर आक्रमण होता तो स्वागत करे। गुजरात के वासद में एसवीआईटी में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। एसवीआईटी वासद की एनएसएस यूनिट द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आनंद के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 154 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें छात्रों, स्वयं सेवकों और स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आनंद के वाइस चेयरमैन शैलेश पटेल ने छात्रों को रक्तदान की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर देवेंद्र सचदेवा और डॉक्टर किशोर सोनी ने भी इस शिविर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इंडियन रेड क्रॉस में ब्लड डोनेट કર્યું હતું ફર્સ્ટ ટાઈમ
મારું એક્સપિરિયન્સ બહુ જ સારું રહ્યું. ત્યાંના સ્ટાફ મેમ્બર્સ, ત્યાંના નર્સ, ત્યાંના બધાનો બિહેવિયર એટલો સરસ હતો. ત્યાંના એનએનએસ બધા સ્ટુડન્ટ્સ બધાનો બિહેવિયર એટલો સારો હતો. બધાનું શું કહેવાય કોર્પોરેટ બધાએ બહુ સારી રીતે બધાએ કન્વિન્સ કર્યું હતું. અને મેં બધાને એવું જ કહેવા માંગીશ કે બધા એક વાર બ્લડ ડોનેટ જરૂરથી કરજો. ત્યાંથી જરૂરતમંદ જેટલા બી લોકો છે બધાને સહાય થાય અને બધા સારી રીતથી મતલબ બ્લડ ડોનેટ કરી શકે. આજે તમને બ્લડ ડોનેશન વિશે અમારી કોલેજમાં થયેલ એના વિશે જાણવા માંગુ છું. અમારી કોલેજમાં ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ થયેલ હતો. તેમાં મેં પહેલી વાર બ્લડ ડોનેટ કર્યું. મારો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ સરસ રહ્યો. ત્યાંના સ્ટાફ મિત્રોએ અને એનએસએસ મિત્રોએ ખૂબ સરસ કામ કરેલ છે. અને મારું કહેવું એ છે કે દરેક વ્યક્તિએ બ્લડ ડોનેટ કરવું જોઈએ અને જીવનમાં એકવાર બ્લડ ડોનેટ કરવું જોઈએ, જેથી જરૂરતમંદ लोगों ने मददरूप થાય. एसयूआईटी में एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ और हम लोग हर साल यहाँ एनएसएस के बच्चों के थ्रू ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं. थैलेसेमिया है, ब्लड कैंसर है, प्रेगनेंसी के टाइम में है, एक्सीडेंट के टाइम में लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और वो ब्लड रेगुलर जो है वो काफ़ी शॉर्टेज रहती है. इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं. इस बार हमारे यहाँ एनएसएस के बच्चों ने, स्टूडेंट सेंट्रल कमेटी ने और स्टाफ ने काफ़ी बड़े चढ़ के हिस्सा लिया है और हमने 154 यूनिट कलेक्ट किए हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके. इसमें हमको लायंस क्लब ने भी मदद की है और गुजरात एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने भी काफ़ी मदद की है. गुजरात के पाटन के संखेश्वर में अब यात्रियों को सुविधाओं से युक्त नया बस स्टेशन मिलेगा. संखेश्वर तीर्थ जहां हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहां यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक बस स्टेशन का निर्माण करवाया गया है. लगभग 4,460 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस बस स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म, पैसेंजर वेटिंग एरिया, कंट्रोल रूम, वाटर रूम, महिला विश्राम कक्ष, पार्सल रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इस बस स्टेशन का लोकार्पण गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा किया गया. પાટણ જિલ્લાના સંખેશ્વર નગર ખાતે શ્રી સંખેશ્વર મહાતીર્થના દર્શનાર્થે લાખો લોકો દર વર્ષે પધારતા હોય છે. એ જ રીતે આજુબાજુના 30-32 ગામો માટે સંખેશ્વર બસ સ્ટેશન એ ખૂબ મહત્વનું સેન્ટર તરીકે ઓળખાય છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં બસો અહીંયાથી અવર જવર કરતી હોય. 1.5-2 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું અહીંયા દર્શન માટે આવ્યો હતો, દાદાના ચરણોમાં વંદન કરીને પ્રાર્થના માંગીને જ્યારે બહાર આવ્યો અને ગ્રામજનોએ માત્ર એક જ માંગણી કરી કે આ બસ સ્ટેશનનો જે ફસાયેલો કેસ છે તેને નિકાલ આવીને અહીંયા ઝડપથી બસ સ્ટેશન બને. તાત્કાલિક 15-20 દિવસમાં ટેન્ડરની પ્રોસિજર હોય, ખાતમુહૂર્તનું પ્લાનિંગ હોય, બધું પૂર્ણ કરીને 15-20 દિવસમાં જ ખાતમુહૂર્ત કરેલું હતું અને માત્ર 1.5 વર્ષની અંદર ખાતમુહૂર્તથી લોકાર્પણ સુધી સંખેશ્વર બસ સ્ટેશન આજે અદ્ભુત બધી જ વ્યવસ્થાઓ જોડે તૈયાર થઈ ગયું અને લોકાર્પણ બી કરી લેવામાં આવ્યું. હમણાં 15-20 મિનિટમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આ બસ સ્ટેશનનો લાભ લેતા આપ સૌને નજરે પડશે.